today we are going to discuss about the remaining transportations, major transportations. Yesterday we had discussed about railway and the roadways. So today we will go to the remaining portions, that is waterways, airways, and pipelines. And its distribution, its major distribution in India, not going to the world, because वो तो इसमें जरूरी नहीं है. This unit is mainly intended for India. So I thought it would be better to unwanted things को avoid करके जाएगा सोच पे. So first one is the waterways. So when we say about the waterway, it's the carrying of goods and passengers through water mode. So track hoga water. As we know, this was the cheapest mode of transportation. Was the cheapest because after railway, it is still one of the cheapest है, but सबसे cheapest हो गया है railway. उसके बाद water transport हो गया. And for individuals, without fuel, they can use this, like local boat को use कर सकता है. Without machines, we can use the water transportation. And most of the water local transportation, you can see, it's without the without the help of the machinery, it can be traveled. So here, the importance of water transport is it is one of the cheapest and oldest mode of transport. After the development of the civilization तो हो गया है, उसके बाद क्या हो गया है? People started moving from one place to another. तो उसी टाइम से before the invention of the tires, people used this river को use करके ऐसा floating wood ऐसा सब चीज को डाल के they have started moving from one place to another. ये तो शुरू किया था. So this is one of the the oldest mode of transportation. And another peculiarity is that we need not make any track for the water transport other than some canals if required. In the modern world में we need some shortcut तो बनाना है. अभी सुएज कैनाल ऐसा बोलते हैं, नहीं तो विद इन द इनलैंड ट्रांसपोर्ट में इसके अंदर भी छोटा कैनाल बनाता है. Other than this, we are using the natural track. So initial capital is not that much required for the making of track बनाने के लिए initial capital की इतना जरूरी नहीं है, because there is natural track there. And for maintenance also, its cost is comparatively less. Remove silt को निकालना पड़ेगा बीच में से, और ऐसा वाला कुछ छोटा चीज करने से ही हो जाएगा, अच्छा वाला ट्रैक बन जाएगा. Other than this, the cost is only for the workers. That is why it is said to be that the cost of operation of water transport is very less and also is fuel efficient. Sometimes it is moving with the help of gravity. It can be used with the help of wind. Wind help से भी we can travel in water. Bigger ships in the olden days were using the power of wind to move from one place to another. So fuel efficient है. Because another thing is that the friction is comparatively lesser in water bodies. So all these helps the water transport to be one of the cheapest mode of transport. Another peculiarity is that it is environmental friendly. Environmentally, this is very friendly है, क्योंकि boat use करता है तो उतना ज्यादा emission. We are using non-conventional energy. Wind से होगा, नहीं तो human energy से होगा. Birth almost 50 to 60% तो उतना ऐसे ही जाएगा. So that is all environmental friendly है. Then
it has the largest carrying capacity. Largest carrying capacity and is most suitable for carrying bulky goods over long distance. This is mainly intended for ocean transport के लिए है. Mainly the bigger ship. क्या करेगा? अभी iron and steel industries इसको तो दूसरे country में लेके जाना है. So aeroplane is not the mode of transport that we are using. We are using the ship. Even though it takes some time, it can carry huge amount of goods from one place to another. That is its peculiarity or its advantage. So in reality, the water transportation can be divided into two. One is the inland water transport, another one is the ocean transport. Inland means within the country's inland areas like streams, rivers, canals, lakes, ये सब चीज आएगा inland के अंदर. Consist of natural and artificial tracks इसके अंदर होगा. The second one is the oceanic transport, which is the best mode for trade. Trade करने के लिए with the other countries, the best suitable mode of transport is the ocean transport. It is mainly the natural transport using. What are they? Sea and the ocean. These are the two tracks which is being used by the ships. Other than this, just I said earlier, we are using canals. Abhi Panama Canal hai, Suez Canal hai, different canals for making shortcuts. Other than that, we are directly using the ocean or the water natural tracks. So ocean transport again is being divided into coastal shipping and overseas, so near to the coast, and other areas we will see it as overseas shipping. So these are the transportation types, water transportation types, mainly inland water and the oceanic water. So when we are saying about the data also, it is two type hoga, inland hoga and the ocean transport hoga. So water transport in India mein kaise hai? Around 95% of the trade by volume and 75% by value is done through marine transport. So ocean transport use karta hai within the India. 95%. All the heavy materials or the bulky materials is being carried using ship. Ship ke sahayata se we are taking or we are conducting trade. Even the oil, crude oil भी ऐसे ही लेके आता है, ऐसे ही रहता. Other than अभी recent development है pipeline, तो अभी तक we are mostly using this ship or the marine transport system for carrying this. India has now it is 13 major and 205 notified minor intermediate airport है. उतना सा airport भी intermediate port है, sea port है हमारे लिए. So with the help of these ports, we are taking the goods from one place to another. And overall, these key ports क्या करता है? Carries over 1,534 million tons of goods. उतना सा लेके जाता है. This is the data of 2020 financial year का है. And inland water, if you take, it provides 1% of the total transportation system. So उतना सा developed नहीं है, but we are developing it in the way of national waterways. National waterways बोल के we are developing it after 2016 के बाद. तो उसके पहले तक so far we have not that much of navigable water bodies, comparatively lesser है. The main water bodies, inland water body बोलने से mainly the Ganga and the Brahmaputra basin we are using. Other than this, some of the peninsular rivers also we are using for the transportation, water transport, inland water transport, we are using it. And overall, 14,544 kilometers of navigable water we have. उतना सा ही है हमारे लिए अभी water. It is going to develop after पूरा ना अभी we have almost
111 नेशनल वाटरवेज का तो प्रपोजल हुआ है, उसमें से कुछ तो अभी एक्टिव हो गया है एंड इट इज प्लानिंग टू अबाउट 20,275 किलोमीटर्स का नेशनल वाटरवे नेटवर्क बनाने के लिए वी आर ट्राइंग फॉर दैट। तो इसके अभी ऐसा लेके आने से वी हैव मोर navigable waterways in our country which can be used to carry passengers as well as goods. So Inland Water Authority of India is controlling the inland water को और national waterways को control करता है this Inland Water Authority of International Waterway, ये याद रखना है। Then operation नेशनल वाटर ऑपरेशनल, अभी वाटरवेज के नेशनल वाटरवेज के बारे में बोला है। वी हैव डिफरेंट वाटरवेज, सो राइट नाउ वी हैव 111 नेशनल वाटरवेज है, उसमें से सब तो एक्टिव नहीं है। तो इसमें से 1 2 3 4 ये जो पहले 4 है ये तो याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछने का चांस है। वाटरवे नंबर 1 कनेक्ट्स व्हाट, वो पूछने से एक्चुअली नेशनल वाटरवे नंबर 1 कनेक्ट्स गंगा विद द हुगली रिवर सिस्टम, हल्दिया टू इलाहाबाद, 2 डिस्ट्रिक्ट है, सो दो एरियाज है, दैट इज हल्दिया टू इलाहाबाद है इसका कनेक्शन। गंगा, भगीरथी एंड हुगली रिवर, ये तीनों मिला के जो वाटर बॉडी है दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 1। सेकंड वन इज इन ब्रह्मपुत्र रिवर में है, धुबरी टू सादिया, especially mainly in the Assam region में इसका है, असम वेस्ट बंगाल रीजन में इसका एक्सटेंशन है, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 2। देन नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेस्टर्न कोस्ट कनाल, दैट इज इन केरला में है, कोट्टपुरम टू कोल्लम वाटरवे है, इसमें भी आर्टिफिशियल कैनाल्स भी इसके अंदर है। देन नेशनल वाटरवे नंबर 4 दैट इज फेज 1 डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेच, ये पूरा नहीं हुआ है, मुक्तियाला टू विजयवाड़ा है, कृष्णा रिवर में है। सो दीज आर द मेजर वाटरवेज। तो ये है 2016 के पहले वी हैव वाटरवे नंबर 5 तक था। तो इम्पोर्टेंट अमंग दम इज दिस 4 नेशनल वाटरवेज है। उसके बाद 2016 के बाद वी हैव मोर 1111 तक आया है। So all these are started working, some of them are still half कंस्ट्रक्शन में है, पूरा नहीं हुआ है, स्टिल एक्टिव है। अंबाला रिवर, राजपुरी क्रीक्स, देवादंदा क्रीक्स, देन शास्त्री रिवर, मंदोवी, उस्गोन ब्रिज टू अरेबियन सी स्पिनिंग 41 किलोमीटर का वो है, जौरी सनवोर्दम ब्रिज उधर है, नर्मदा रिवर में है, एक तो है ताप्ती में है। तो ये सब एक्टिव है। तो इसमें से यू वांट टू याद रखना है मेनली दिस 4, कहां से कहां तक इसका एक्सटेंशन है। सो दीज आर दी मेजर इनलैंड वाटरवेज। इफ यू लुक यू कैन सी ब्रह्मपुत्र में है एक, तो गंगा में है, इट इज एक्सटेंडिंग लाइक दिस, देन नर्मदा ताप्ती में है, देन गोदावरी में एक्टिव है, कृष्णा में एक्टिव है। सो बर्थ है। अदर देन दिस अभी पोर्ट बोलने से कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बैक टू तूतिकुरिन, तूतिकुरिन से लेके कोच्चि, कोच्चि से मैंगलोर, देन मर्मागोवा, मुंबई, कोलकाता, ऐसा बहुत कुछ पोर्ट भी है। तो दिस इज द मेजर पोर्ट एंड यहाँ से सब ये सब पोर्ट यूज करके ऑलमोस्ट 13 मेजर पोर्ट है। तो ये पोर्ट को यूज करके वी आर ट्रेडिंग our goods to other countries. So that is about internal waterways. So second one is the oceanic waterways. It consists of mainly 13 large and 200 small ports. Major banks of 5,600 kilometers. So major peninsular India का वो region में you can see these ports. Large ports are maintained by central government. Small ports is mainly controlled by the state government. And for knowledge,
Largest port in India is the Jawaharlal Nehru Port in Mumbai, and largest natural port is the विशाखापट्टनम. ये याद रखना है, ये सब पूछने का. And tidal port is also in India, that is the Kannada, क्योंकि हाई टाइड आने से वो पोर्ट अंदर तक लेके पानी लेके आ जाएगा, तो शिप कैन मूव टिल दैट इंटीरियर तक एक तो लेके आ सकता है बेस्ड ऑन द टाइड. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द टाइडल पोर्ट, दैट इज द Kandla port. And there is another project, that is Sagarmala project, which is a recent project where we are planning to develop 6 new port in India. So if you look the major ports, इसमें मेजर एंड माइनर पोर्ट देखने से महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा पोर्ट, स्पेशली इन महाराष्ट्र में होता है. मुंबई पोर्ट है इधर, तो यहाँ सबसे ज्यादा पोर्ट इज इन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है. सेकंड गुजरात, थर्ड तमिलनाडु, एंड फोर्थ कर्नाटका. सो मोस्ट ऑफ them गुजरात, महाराष्ट्र and Karnataka in this side, and Tamil Nadu in this side has the maximum number of port in India, which includes major, minor, and the medium ports. If you look at the names of the port, इसमें first one is the Chennai port, artificial port है, that is in the eastern coast. Then the Kochi port, then Ennur port in Tamil Nadu, India's first corporatized पोर्ट है, ये भी याद रखना है. देन कोलकाता, देन कंडला, मैंगलोर, मर्मागोवा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, आल्सो नोन एज नवसेवा. नेवी मुंबई पोर्ट था, अभी इट इज नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलता है. देन पारादीप, तूतुकुड़ी, विशाखापट्टनम एंड पोर्ट ब्लेयर. सो दीज आर दी major port in India which control the ocean waterways को यही control करता है. So there are advantages and disadvantages for the water transport. तो water transportation के लिए advantage भी है, disadvantages भी है. Important are given here. One is the less maintenance cost, that we have already said. तो track बनाने की जरूरी नहीं है, इसको तो मेंटेनेंस करने की भी जरूरी नहीं है, अदर दैन टू रिमूव सम सिल्ट लेके जाना है, जो ऑब्स्टेकल बीच में आता है वो को निकालना है. ये सब करने से वी कैन इजीली मेंटेन इट. दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट. अदर देन दिस इज चीप है, क्योंकि फ्रिक्शन कम है एंड नेचुरल मेथड्स भी है इसको तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड सो इट इज चीप ट्रांसपोर्ट है. कॉस्ट भी कंपैरेटिवली लेसर है, not that much of railway, but comparing to roadways and airways, this is one of the cheapest transport. अभी goods लेके दूसरे country में जाना है, so this is the cheapest method. Then use of bulky goods, बहुत ज्यादा goods को carry करके ले सकता है. तो ये एक ship देखने से इतना बड़ा है, उसके अंदर बहुत tons, thousands of tons of goods को एक साथ लेके जा सकता है. Then यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज के टाइम में भी, जैसे कुछ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए कि this can be used. Then helpful in defense. We know that our naval system where we are using this water transport ही है, so it is controlling the coastal boundary of India. Then important for foreign, this is सबसे important है. Water transport is, I said 90% of the trade is or transportation of goods is happening with the help of this water transport. So these are some of the advantages of the water transport. On the other side, it has many disadvantages as well. We know इतना सा बड़ा है, इतना सा cheap है, still we don't prefer this water transport for long distance के लिए. We don't prefer. अभी यहाँ से दूसरे country में जाना है, तो passengers will usually try to prefer flight मिलेगा. थोड़ा पैसा ज्यादा होने से भी it will not take that much of time. It is थोड़ा risk होने से भी we will prefer that. But on the other side, water transport के लिए disadvantages है. One is slow speed.
अभी बहुत दूर जाएगा, but for traveling from one area to another, it will take lot of time. It is a time taking process. It will take sometimes even months to cover from month, बहुत ज्यादा टाइम लेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. देन मोर रिस्की है. मोर रिस्की एक तरह का वेदर कंडीशन प्रॉब्लम है, सी कंडीशन प्रॉब्लम है, देन पायरेट्स का भी प्रॉब्लम है. तो ऐसा बहुत ज्यादा रिस्की है दिस वाटर ट्रांसपोर्ट. देन रिलायबिलिटी, तो ऐसा है इसमें ज्यादा एक जगह से दूसरा जगह पे जाना है. वी कांट से दैट वी विल रीच इन दिस मच ऑफ टाइम, ऐसा नहीं बोल पाएगा. इवन तो it is widely used for carrying goods, still it is not reliable. एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए उसको ज्यादा reliable बिलीव करना तो थोड़ा रिस्की है. Then port accessibility, ऐसा है if we are on the way, if we want to पार्क कम ये तो एंकर करना है शिप को, तो पोर्ट accessibility चाहिए. एक कंट्री में आकर एंट्री करने के लिए पोर्ट accessibility चाहिए. अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड टू एंटर टू दैट कंट्री. तो पोर्ट accessibility तो होनी चाहिए. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू एंकर द शिप. शिप को एंकर करना मुश्किल है. नहीं तो ओशन के और सी के अंदर दूर में away from the mainland we can anchor the ship. Then not appropriate for perishable good. Right now this is not a big problem because ये बहुत कुछ रेफ्रिजरेटर जैसा बहुत कुछ चीज है, इसको तो perishable goods को सेव करने के लिए. Still as it is taking too much of time, it is not appropriate for the perishable goods. Then journey frequency, ये भी बहुत कम है. अभी एक शिप गया है दूसरे जगह पर टू द अमेरिका, फ्रॉम इंडिया टू द अमेरिका, इट विल टेक मंथ्स टू रीच. तो एक तो गया है, वो शिप को वापस आना है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द जर्नी इज आल्सो कंपैरेटिवली lesser. So these are some of the disadvantages of the water transport. That's about the main things. So इतना सा है about the water transport. Then airways second, the fastest mode of transport. Right now most of the people are depending for long distance right now, from middle class to upper class, mostly depending on this airways. Low class भी try उतना ज्यादा पैसा, because the cost is high. So most of the high class is trying to travel in this mode of transport, क्योंकि quickly पहुंच सकता है, but it has its own disadvantages as well. The air transport is the fastest means of transport from moving from one place to another. It reduces distance, कैसे? By minimizing the travel time. As I said, from moving to from India to America, it will take months in ship. रोड जैसे जाने से भी देयर इज नो रेलवे, तो रोड रूट में जाने से भी रोड रूट भी कंटिन्यूस तो नहीं ही है. तो अदर देन दिस शिप इज द ओनली वे. इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम दैट एरिया टू इंडिया टू अमेरिका, इट विल टेक मंथ्स. सो एयरवेज में जाने से इट विल टेक 12 to 14 आवर्स के अंदर वी कैन रीच अमेरिका. तो उतना शॉर्ट कर दिया है डिस्टेंस को. अभी 500 किलोमीटर में जाने वाला है, 600 सुपरसोनिक है, तो साउंड के स्पीड में जाने वाला है. तो ऐसा बहुत कुछ प्लेन्स है, राइट, वी हैव व्हिच हैज शॉर्टेंड द डिस्टेंस बाय रिड्यूसिंग द टाइम. तो इंडिया में सबसे फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट इन 1911 में ऑपरेटेड ओनली फॉर 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. ये दो जगह को कनेक्ट कर 1911 में ये शुरुआत किया है. उसके बाद में तो उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, कॉमर्शियल तो उतना ज्यादा नहीं था. इन 1947, दैट इज द इंडिपेंडेंस टाइम में है, एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज. तो आफ्टर इंडिपेंडेंसी इसका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में. तो ड्यूरिंग 1947 में 4 कंपनीज था, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड,
Air Service of India and Deccan Airways. So these are the companies which were dominated during 1947. Then 4 other companies are joined during 1951, like Bharat Airways, Himalayan Aviation Limited, Airways India, and Kalinga Airlines. तो ऐसा आ गया है. Then 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट में नेशनलाइज कर दिया है 2 कॉर्पोरेशन that we know. One is Air India International and Indian Airlines. तो इसको अभी टाटा को बेच दिया है. We have, so earlier it was like that. We have 2 domestic के लिए and international के लिए we have 2. One is Air India and another one is Indian Airlines. The real development took place after post independence time में है. उसी टाइम में the authority was the Airport Authority of India. He is actually the responsible for providing safe, efficient air transport in India. Provide करने के लिए we have the Air Authority of India, Airport Authority of India. The authority manages 125 airports. Right now we know that अभी छोटा छोटा मिला के इसके ऊपर अभी एयरपोर्ट है इंडिया में. And for this we are in the 9th position. And reason अभी एक और स्कीम लेके आया है उड़ान. उड़े देश का आम नागरिक को ऐसा बोल के लो कॉस्ट में डोमेस्टिक फ्लाइट को चलाने के लिए there was a government project in this. तो उड़ान scheme is for what? पूछने से you can write that is relating to air transport in India. So there are certain advantages and disadvantages for air transport as well. सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना सा एक फायदा होगा, अपना सा एक प्रॉब्लम भी होगा. So what are the advantages of air transport? First one is the high speed है, फास्ट सर्विस है. एक हाई स्पीड है इसलिए तो फास्ट सर्विस है एक जगह से, लेकिन डोर टू डोर सर्विस तो नहीं होगा. फ्यूल एफिशिएंसी कम है, चीप कॉस्ट तो नहीं है. सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑन वन साइड. लेकिन एडवांटेज है फास्ट सर्विस कर सकता है, तो पैसा है तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सबसे अच्छा है. लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, वो तो हम बाद में बोलेगा. देन सेंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू आर फ्राइड. तो जहां भी जाओ, क्योंकि पेरिशेबल चीज को भी यहाँ इसमें लेके जाने के लिए इजी है, क्योंकि मैक्सिमम एक दिन के अंदर द थिंग विल रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जहां भी यू कैन टेक योर फ्राइट्स और द गुड्स यू कैन टेक. देन हाई स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटीज दे आर फॉलोइंग. स्टिल इट इज रिस्की, लेकिन स्टैंडर्ड अभी एक फ्लाइट एक एयरपोर्ट में आएगा, इसका तो पूरा चेकिंग होगा whether it is working, is there any problem, and within the airport passengers will be checked for the security checks को उसके अंदर. So there is high standard of security है this air transport के लिए. And like the waterways, airways is also using the natural route. Natural route ही use करेगा, but still it is costly, not like the waterways. It is costly है, but the track we don't want to make. Then there is less need of heavy packaging. So because it can be easily travel from one place to another. इतना high speed है, fast service भी है air transport का. तो disadvantages भी है on the side. One is risky है. We know even after multiple security checks, इसके अंदर terrorist attack भी हुआ है, and also फ्लाइट का लैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, फ्लाइंग टाइम में भी इसका तो क्रैश होता है. तो बहुत प्रॉब्लम वी आर हियरिंग. तो उतना ज्यादा रिस्की भी है. एस्केप होने का चांस तो कम है. एक बार डैमेज हुआ, इंजन डैमेज हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो एस्केप होने का चांसेस तो कम है. सो इट इज रिस्की है. अनदर वन इज कॉस्ट. इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन और द लेमैन के लिए. ये तो उतना ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है. अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए thousands of rupees we want to spend. अगर अभी रेलवे में जाना है एक जगह पे दूसरे 200 अभी hundreds of rupees में जा सकता है, लेकिन if you are taking flight thousands of rupees देना पड़ता है. Then some product is limited, like explosive materials को लेके जाना है,
नहीं है तो क्रूड ऑयल जैसा ऐसा वाला चीज जो इनफ्लेमेबल है उसको भी लेके जाना है, ये सब रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। सो सब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे इसको तो ले जाना मुश्किल है। देन कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कैरियज, तो आज इट इज फास्ट, इसको तो जल्दी ले सकता है, बट हेवी मटेरियल बल्की मटेरियल को कैरी करने के लिए इट विल नॉट बी कैरिड इन दिस एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इवन देयर इज कार्गो फ्लाइट्स है, उसमें भी इसको तो लेके जाना मुश्किल है, देयर इज लिमिटेशन। देन एनॉर्मस इन्वेस्टमेंट बिकॉज फ्लाइट का ट्रैक तो बनाने की जरूरी नहीं है, बट फॉर एयरपोर्ट बनाने के लिए उसका तो ये रनवे बनाने के लिए उसका सामने वाला जो सर्विसेज बनाने के लिए इट रिक्वायर्स इनॉर्मस इन्वेस्टमेंट, इनॉर्मस कॉस्ट चाहिए। सो these are some of the disadvantages of the air transportation system. Then factors for development of air transport in India. India में what are the positive and negative factors which support the development of air transport in India? बोलने से सबसे important है the weather condition in India are quite quite congenial to air transport, क्योंकि poor visibility है due to cloud, fogs and mist in air transport, वो भी होता है। But on the other side, India is likely to have clear weather for most of the time, ऐसा है। Other than the rainy season, cold season, ये सब season में we have some problems like poor visibility, fog सब है, लेकिन during rainy, other than that we have clear sky है, क्योंकि we are in tropical region में है, तो उतना ज्यादा disturbance we don't get in other times. Then the central location of India which help to connect हमारे western side में Europe in the just Europe in west and Asia on the western side, and south में है East Asia and ईस्ट एशिया है साउथर्न साइड में। तो ये पूरा एरिया में कनेक्ट करने के लिए इट इज पॉसिबल। तो सामने यूरोप है, तो उधर जाने के लिए ये कैन यूज अदर साइड, राइट साइड में पैसिफिक ओशन क्रॉस करने से वी कैन रीच अमेरिका, तो उतना इजी वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन इंडिया हैविंग एक्सटेंसिव प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन के वजह से एयरपोर्ट बनाने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल। एयरपोर्ट अच्छा, अभी इफ यू लुक द एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बड़ा एयरपोर्ट ईटानगर में आ रहा है, लेकिन नॉट इन द हिली रीजन्स, इट इज कमिंग टू द ओलोंगी रीजन का जो प्लेन एरिया है। सो प्लेन एरिया इज मच सूटेबल फॉर रनवे बनाने के लिए, मच सूटेबल प्लेस वही है। देन द नीड ऑफ एयरवेज इज हाई ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एरिया, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, मोर देन 3000 किलोमीटर के ऊपर है, नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, एंड 2900 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो विद इन द कंट्री डोमेस्टिक एयर सर्विस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो दीज आर ऑल द फेवरेबल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस। अभी थोड़ा थोड़ा बीच में प्रॉब्लम भी है, लाइक वेदर कंडीशन में भी प्रॉब्लम है बोलने में, पैसा कॉस्ट भी ज्यादा है समटाइम्स, ये सब प्रॉब्लम है, बट इंडिया हैज सम फेवरेबल कंडीशन फॉर दी, वी आर इन द 9th पोजीशन में है एयर सर्विस में। तो लोग दिस आर सम ऑफ द एयरपोर्ट्स इन इंडिया। अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना है, हाईएस्ट, इसमें 5 एयरपोर्ट है इन, एंड फॉलोड बाय सेकंड वन केरला एंड तमिलनाडु में दे हैव 4 एयरपोर्ट है अभी। देन वी हैव कर्नाटका, गुजरात, ये सब में वी हैव 3 एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो हाईएस्ट एयरपोर्ट यू कैन सी इन उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई एम सेइंग अबाउट। So that's about the airways in India. Now we can go to the last transportation system, that is the pipeline transportation system. So this is a new
way of carrying goods, not the passengers. Early to pipeline we were using for carrying water. वाटर को लेके अभी भी म्युनिसिपल रीजन में पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी वर यूजिंग द पाइपलाइंस. एक बड़ा टैंक होगा, उधर से पानी को लेकर दूसरा डोमेस्टिक इंडिविजुअल होम में देता था. So that was the early type of pipeline. But right now we are mainly using this pipeline transport for carrying क्रूड ऑयल, गैस, ये सब लेके दूसरे जगह पर जाने के लिए वी आर यूजिंग द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया में है, इंक्लूडिंग क्या क्या अभी लेके जाता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पावर एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड if we are taking that in some vehicles, तो इसका लॉस होने का भी चांस है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में. सो ये रिड्यूस करने के लिए we can use this pipeline transport. इसमें ट्रैवल टाइम का जो लॉस होता है वो बहुत कम होगा दिस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में. एंड द कैरिंग कॉस्ट इज आल्सो वेरी लेस कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. कैरिंग कॉस्ट है कम है. इनिशियल कॉस्ट तो होगा पाइपलाइन बनाने के लिए. आफ्टर दैट देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गैस एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स. दैट इज द importance of this pipeline transportation. And there are some major pipeline network in India है. The important first pipeline transport was Naharkatia to Baruni pipeline transport है, which connect Nunmati, which was started operating during 1962 में था. पहले ये तो हो गया है Naharkatia oil field to Nunmati था. Then it was extended to Baruni, and now it has been Baruni is in Bihar में है, and now it has extended to Kanpur in Uttar Pradesh तक. Almost 1167 kilometers इसका लेंथ है. The second one is Mumbai High to Kayoli तक है, connecting Mumbai, Ankleshwar and Kayoli, consisting of 210 kilometer long pipeline है, and was completed during 1965. This is the second important pipelines in India. तो मुंबई हाई से लेकर दूसरी जगह पर ले सकता है. देन सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन. सलाया कोयाली एंड मदुरई पाइपलाइन, दिस इज मेनली इन गुजरात से है तो लेके उत्तर प्रदेश तक, कवरिंग ऑलमोस्ट 1256 किलोमीटर लेंथ का पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है. तो गुजरात से है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए वी आर यूजिंग दैट. देन हजारिया, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन टू कैरी नेचुरल गैस को लेके जाने के लिए गेल ने बनाया. गेल मीन्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. गेल ने ये बनाया है. इट हैज अ किलोमीटर ऑफ 1750 उतना लेंथ का है ये पाइपलाइन. देन जामनगर अगेन इन गुजरात है तो लोनी एलपीजी पाइपलाइन. एलपीजी को लेके जाने के लिए दिस इज आल्सो मेड बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. गेल ने बनाया है. जामनगर गुजरात टू लोनी इन नियर टू दिल्ली, दिल्ली तक ये लेके जाता है. ट्रांसपोर्टिंग ओवर, पहले तो 3.5 लाख एलपीजी था, अभी इट वाज 5 लाख सिलेंडर पर डे ये तो कैरिंग कैपेसिटी है. इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट किया है 2001 में एंड सेकंड फेज कंप्लीट किया है 2003 में. देन कांडला बटिंडा पाइपलाइन 1131 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है, मेनली टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल. कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये बनाया है. इफ यू लुक most of the
तो आसाम में है वी नो दैट दिग्बोई, यहाँ से लेकर जाएगा। दूसरा हो गया गुजरात रीजन में, यहाँ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एंड मेनी ऑफ द रिफाइनरीज यू कैन सी इन दिस गुजरात रीजन में है। तो उधर से दूसरे जगह पर लेके जाने के लिए वी आर यूजिंग पाइपलाइन। देन मुंबई हाई, दिस इज द हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करता है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई दिग्बोई यहाँ से है, दूसरा है। तो बहुत ज्यादा रिफाइनरीज आर देयर इन गुजरात, तो उधर से भी लेके दूसरे जगह पर जाने के लिए। नाउ इट इज एक्सटेंडिंग टू द साउथ इंडिया एज वेल। द गेल प्रोजेक्ट्स आर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द साउथ इंडियन रीजन आल्सो। तो इसमें जो जरूरी नहीं है, दिस आर दी इम्पोर्टेंट, ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। That's it. As I said yesterday, you can't limit your knowledge. इसमें तो ऐसा limit नहीं मत करो। You want to refer more. I will also give you more details regarding the transportation. तो पता नहीं कहाँ से क्या पूछेगा। इसमें तो I have given you basic general details तो दिया है, but we can't say इसके अंदर से ही पूछेगा, ऐसा नहीं बोल पाएगा। You want to refer more, especially in transport, पूरा transportation, whether it is road transport, whether it is railway, alter, air, pipeline, ये सब में पता नहीं कहाँ से क्या पूछेगा, पता नहीं होगा। Important point तो दिया है। When we are discussing, when we will discuss about the different question papers, you will get more idea regarding the same. Okay. Can we stop for the day? Okay, sir. Thank you, sir.